things, and I want to talk about. One, this reminds me of the typical David versus Goliath battle जो कि बनारस में हुई थी 2014 में, between Narendra Modi and Arvind Kejriwal. On one side, in Varanasi, this was the prime ministerial candidate, and Arvind Kejriwal went there and said, I'm going to fight against him. It really, the stature of Arvind Kejriwal suddenly rose in Indian politics after that. So when you're saying publicity, possibly, yes, you're Aditi, saying something. before you move to others, Arvind Kejriwal and Chandrasekhar, I think they're at two different levels. Second, Chandrasekhar also wanted to contest against Narendra Modi in 2019. But later on, he withdrew and he said, I'm going to support Mayawati. But you can't compare It's not an apple. with It's not an Kejriwal. apple to apple. It's not an Yeah, apple to apple comparison, That's definitely. right. But it does remind you of that. Yeah, It does it does. remind you of a David versus Goliath battle, because the statures of both those leaders, Arvind Kejriwal and even Narendra Modi for that matter, was at a very different level versus the level of Yogi Adityanath and the Bhim Army. But Kejriwal got some votes, he did not lose his deposit. This guy may even lose his आपने तो अभी deposit. से prediction कर दी Sunita that the Bhim Army chief He will may lose his even lose deposit. because you see the turf, it is Yogi's turf. The caste is not in his favor. He doesn't have a team right now. All the odds are against him in Gorakhpur. So let me bring in Dr. Mahendra Kumar from Gorakhpur himself. He's assistant professor and a political analyst, so to speak, and he is from Gorakhpur. He understands that space very well. Do you agree with what Sunita is saying completely? Because there was a time 2018 का जो बाइपोल हुआ था, उसमें निषाद पार्टी जीती थी, समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी के टिकट से लड़ रहे थे, but the contested and the BJP had lost, even if it was by a bare margin of 20,000 votes. So it's not unbelievable to believe that BJP can be defeated, but this इस बार तो निषाद पार्टी के साथ बीजेपी ने टाई अप कर ही लिया है, so that possibility does not arise. So please, yes, your view. Two things. You can't compare that bipolar. It was a Lok Sabha elections, and it also had the Gorakhpur rural areas within it boundaries. So this is Gorakhpur urban constituency, Gorakhpur Shahar. So it's basically number one, that Yogi Adityanath is here since 1994, and he knows each mohalla, each ward. It will be not exaggeration if I say each family in the city. So it is definitely, it is just a publicity stunt by Chandrasekhar. But he just want to, as Sunita ji pointed out, he just want to send some messaging. It is a messaging that what happened in Saharanpur, so he is going to. But as far as the outcome of the election is concerned, he is not going to make any impact. Definitely not going to make Dr. Sharad Dhar, let me bring you in from Banaras Hindu University. Dr. Dhar, I'm sure because you must have also understood the caste dynamics and the religious dynamics on that particular seat, so you would understand that yes, it's a no battle for Yogi Adityanath. Lekin, let me talk about, can you give us some sense of इससे चंद्रशेखर आजाद को क्या फायदा पहुंचेगा इस बैटल से? Everybody is saying it's a publicity stunt, it's a publicity narrative, it's a symbolism. जो फायदा अरविंद केजरीवाल उस फाइट से, नरेंद्र मोदी की फाइट से जो स्टेचर मिला था अरविंद केजरीवाल को सडनली इन नेशनल पॉलिटिक्स, डू यू थिंक इन यूपी पॉलिटिक्स चंद्रशेखर आजाद को स्टेचर मिल जाएगा हारने के बाद भी? पहले तो मेरा सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। जहां तक दो चीजों को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, केजरीवाल का और चंद्रशेखर का, दोनों चीजों को कंपेयर ना करें, क्योंकि केजरीवाल उस समय तक जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव के लिए आए थे तो शायद उनका स्टेचर चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी के जो चीफ है उनसे ज्यादा था, तो निश्चित तौर पे ये दोनों को हम कंपैरिजन नहीं करेंगे।
दूसरी चीज, जहां तक वो आदित्यनाथ जी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी में किसी को भी अधिकार है कि वो चुनाव लड़े और उनको लड़ना भी चाहिए। और जहां तक पब्लिसिटी स्टंट की बात है, शायद पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा उनको ये है कि अगर आप किसी अपने से बराबर के पहलवान के साथ लड़ाई करने जाते हैं तो शायद आपको हारने पे किसी तरह का कोई बदनामी का डर होता है। लेकिन जब आप अपने से इतने बड़े स्टेचर के साथ लड़ने जाते हो तो कहीं ना कहीं आप ये दिखाते हो कि मैं कुछ ऐसा रिस्की गेम करूं जिससे कहीं ना कहीं मेरा स्टेचर हो सकता है किसी लेवल पर ऊपर आ जाए। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है इस पूरे सिनेरियो में कि बेसिकली उनका पब्लिसिटी स्टंट ना होकर के, एक कहावत है हिंदी में, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, का कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है। क्योंकि निश्चित तौर पर वो पहले सपा के संपर्क में आए और कई बार हमने क्लिप्स भी देखी हैं कि समाजवादी पार्टी के चीफ के साथ हो गए, बात किए, कहीं ना कहीं उनका काम नहीं बना। और जब उनका काम नहीं बना तो उन्हें लगा कि कुछ और भी स्पेशल किया जाए जिससे कि काम बने मेरा। तो जब वो चीज नहीं हुई तो उनको लगा कि सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि जो सबसे बड़ा आज की डेट में चैलेंज है उसको हम चैलेंज करें, तो शायद हमारा नाम आगे जाएगा। और शायद वोट तो शायद वो कितना पाएंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन निश्चित तौर पे उनका जो ये तरीका है, सुनीता जी की इस बात से मैं पूरी तरह एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट कम एक तरह का रिस्क है कि वो जानते हैं कि कोई किसी तरह का इसमें उनको नुकसान नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका उनके पास जो था उन्होंने अख्तियार किया है और इससे बढ़िया कोई तरीका उनके पास हो भी नहीं सकता है।